Hello, good morning. I'm Professor Nancy Kansakra and we are studying about the web technologies. In previous session, we studied about the basics, what is www, how the internet is invented, and what is the difference between internet and www. Now, in this session, we are going to study more in detail about HTTP request and HTTP response, which is a part of HTTP protocol. So HTTP stands for the Hypertext Transfer Protocol, and HTTP is based on the client-server architecture as we discussed in the previous session. And this client-server architecture model and a stateless request-response protocol that operates by exchanging the message across the reliable TCP/IP connection. And उसमें different methods का use होता है. As you can see over here, there are few request methods which we use in HTTP request, which is get, post, put, delete, and there are many more. And along with that, we are also using some request header files like accept, character set, accept encoding, accept language, user agent, and host. Okay, and HTTP client is a program, you can say a web browser, that establishes a connection to a server for the purpose of sending one or more HTTP request message. And HTTP server is a program. You can say like Apache web server, just take an example of Apache web server, that accepts the connection in order to serve the HTTP request by sending the HTTP response. And we have a few formats about the HTTP request and respond. And in response, we have, we can say that we get the response in terms of the codes. If we'll get once, and it is information, 2, then success, 3, it's for redirection, 4 is for client error, 5 is for server error. And in response header fields, we have date, server, last modified, content length, content type, and so many other things. And you also get in response while you are getting the HTTP response. Along with that, you'll get in some code like status code like 202 if it is accepted. If it is not accepted, then it will give 404, which is very common one. So let's in detail understand with one example, like another example of this status code. So in errors on the internet can be quite frustrating, especially if you don't know the difference between 404 error and 502 error. This error message is also called the HTTP status codes, like this code 202. So that status codes, HTTP status codes, are response codes given by the web servers and helps to identify the cause of the problem. In from that, one is very common, which is 404 file not found. Is the common HTTP status code, and it means a web server cannot find the file you requested, the file, the web page, or other document you try to load in. Your web browser has either been moved or deleted or entered the wrong URL or documented name. Anything it could be happening. But while web server doesn't found the file from server side, it will give you an error code 404 file not found. And HTTP is a stateless protocol, means the HTTP server don't maintain the contextual information about the clients communicating with it, and we need to maintain the session in case we need to feature for our web applications. As we discuss about in request header files. Okay, so in request header files क्या चीजें conclude करता है वो in detail, let's see that. So first one is general header. हेडर फाइल्स में जो चीजें है, जो इंफॉर्मेशन है रिक्वेस्ट या तो रिस्पॉन्स की, वो जो मैसेज बॉडी टाइप का है, उसमें ये जो हेडर मैसेजेस है वो क्या कहना चाहता है. जनरल हेडर है, तो जनरल हेडर gives the general applicability for the both request and response message. Request header है, so this headers fields have applicability
applicability only for the request message. Response header है, so that header fields have the applicability for response message, and entity header है, so that header fields define the meta information about the entity body. So this is all about the request response protocol, and उसमें एक examples ये होता है. Let's take an example कि you have written in your browser, you have written the URL http://www.test1.com/doc/index.html. So ये जो पूरा URL है उसमें रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होगा कि गेट मेथड यूज हुआ होगा, फिर HTTP का कौन सा वर्जन यूज होता है वो वहां पे वो शो करेगा, राइट, वो वहां पे शो करेगा. फिर उसने कौन से होस्ट पे वो चल रहा है. सो यहाँ पे होस्ट नेम था, जो URL मैंने बोला था उसमें होस्ट नेम है www.test1.1.com. फिर वो एक्सेप्ट होगा तो कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट हो रहा है कि जिप फॉर्मेट में हो रहा है, इमेज फॉर्मेट में हो रहा है, JPG फॉर्मेट में हो रहा है, कौन से लैंग्वेज के साथ वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन से एनकोडिंग टाइप, gzip फाइल है, डिफॉल्ट है, वो कौन से उसके साथ एक्सेप्ट कर रहा है एनकोडिंग को, एंड यूजर एजेंट. सो मोजिला वेब ब्राउजर यूज कर रहा है और मोजिला का कौन सा भी सर्वर यूज कर रहा है उसके ऊपर वो उसको आउटपुट देगा. सो व्हाट इज वेब सर्वर? ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमने लास्ट टाइम देखा था. ये हम एक URL एंटर करते हैं, वो URL ब्राउजर के थ्रू मैसेज रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो सर्वर में जाएगा, उस सर्वर पे वो फाइल या प्रोग्राम उसको ढूंढेगा, देन अगेन इट विल कम बैक विद द रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स के साथ वो वहां पे आएगा एंड फिर वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा. सो इस तरीके से पूरा आपका HTTP क्लाइंट एंड HTTP सर्वर यूज होता है, एंड उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वेब ब्राउजर्स का यूज हो रहा है. सो व्हाट इज वेब ब्राउजर्स एंड व्हाट इज वेब सर्वर्स, एंड उनके जो डिटेल में फीचर्स है, ठीक है. वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स अगेन वो एक मीडियम पे चलते हैं. वेब ब्राउजर इज नथिंग बट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, मतलब डेटा रिट्राइव करने के लिए, डेटा प्रेजेंट करने के लिए, डेटा ट्रावर्स करने के लिए आप जो वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हो उसको बोला जाता है वेब ब्राउजर. अभी मार्केट में बहुत अलग अलग वेब ब्राउजर्स अवेलेबल है, लाइक मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है. डिपेंड्स आप कौन सा यूज कर रहे हो, और उसके लेटेस्ट वर्जन भी आ गए हैं. ये जब इन्वेंट हुए थे तब की बात है. एंड उसका काम क्या होता है वेब ब्राउजर का कि information resource is identified by uniform resource identifier and may be a web page, image, video or other piece of content, and hyperlinks present the resource of the enable users to easily navigate the browsers to relate the resources. हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूज कर रहे हैं, एंड उसके यूज इजीली यूज की वजह से काफी चीजें आपके हाथों से घर बैठे आप कर पा रहे हो. यू कैन से दैट वेब ब्राउजर्स की वजह से. तो वेब ब्राउजर 2.0 के फीचर्स क्या क्या है? देयर आर डिफरेंट वेब ब्राउजर्स अवेलेबल इन द मार्केट, एंड उनके जो नया फीचर है उसमें फर्स्ट वन इज फ्लेक्सोनोमी और सोशल टैगिंग. आप बोल सकते हो कि जो ट्रेडिशनल वेब ब्राउजर्स थे लाइक याहू एंड डिमोस, उनके प्रीडिफाइंड क्लासिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में थे. बट यहाँ पे वेब ब्राउजर 2.0 एक अलग फ्रेमवर्क के साथ आता है, क्लासिफिकेशन के साथ आता है, एंड वो अलाउ करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अरेंज कर पाए और उसको आप यूज कर पाओ, एंड उसको बोला जाएगा सोशल टैगिंग. दूसरा फीचर है विकीज. विकीज करके विकिपीडिया अवेलेबल है, हम सबको पता है. हम विकिपीडिया का कहीं ना कहीं यूज करते हैं. आप सिंपली कोई भी वर्ड लिखते हो लाइक प्रेशर कुकर, सो प्रेशर कुकर का मतलब क्या है, उसका हिस्ट्री क्या था, वो कब इन्वेंट हुआ था, कैसे हुआ, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में आपको वो विकिपीडिया पे सारी इंफॉर्मेशन देता है. उसके साथ साथ विकिपीडिया आपको अलाउ भी करता है, आपकी ओर से कोई रिसर्च हुआ है तो आप उसको एडिट कर सकते हो.
Third thing is social networking. Sites like Facebook, MySpace allows user to build and customize their own profile and communicate with friends, right? uh, ये कुछ टाइम पहले की बात थी. Right now we are very popular with the WhatsApp, Instagram, Snapchat, कि वो सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा पार्ट है जिनका डे टू डे लाइफ में यूज होता है. Then we'll have the feature user participation. So in traditional web, the contents are solely provided by the website owner or the company, but in the Web 2.0, the user participated in the content sourcing, and this is also known as a crowdsourcing. So you can say Wikipedia and YouTube. Okay, अभी आप ये सेशन देख रहे हो और इसको उसके थ्रू पढ़ रहे हो. So that is possible because of the user participation. Then we have the long tail. The traditional web browsers like a retail business, the product is sold directly to the user and the revenue generated. But in Web 2.0, the niche product is not sold directly but offered as a service on demand basis, and income is generated as monthly fee and pay per consumption. And last feature is rich user experience. Traditional web are built with HTML and CSS, CGI, and had been offered as a static page. On the other hand, Web 2.0 uses AJAX, means asynchronous JavaScript plus XML, and with that, it represents the dynamic and rich user interface to the users. मीन्स हम अभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो यूजर इंटरफेस आप देखते हो, देखते ही आपको अच्छा लगता है कि आप वहां पे आगे जाके सर्च करो और अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करो. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रिच यूजर एक्सपीरियंस. सो वेब 2.0 कुछ एडवांस्ड फीचर्स दे रहा है जिसकी वजह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू वेब ब्राउजर्स टेक्नोलॉजीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द today's session, and with that, we are completing our unit number 1. We'll start with unit number 2 in the next session. If you have any doubts regarding this, you can put your question in comment box. Thank you so much.